This is probably the third module, which is corporate governance. And corporate governance वाले module में there are certain things that you have to study. Okay, and study मतलब literally by heart करके vomit करना है पेपर में. 3 committee reports पे अभी भी question mark है. इसमें से एक committee report please study that without fail, and that is Cadbury committee report. Everybody has heard of this? Yes, sir. Cadbury committee report, please इसको पढ़ लेना. Sir Adrian Cadbury ने ये बनाया था, not Cadbury company. And this was probably the first written down version of corporate governance. Okay. उसके बाद इंडिया में और भी committees आए थे. Can anybody name them? Thank you so much. कुमार मंगलम बिरला कमिटी रिपोर्ट भी था, और एक था नारायण मूर्ति कमिटी रिपोर्ट भी था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे. लेकिन इट इज हाईली क्वेश्चनेबल कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, बट थोड़ा रीड करके जाने का. और क्या आ सकता है? एजेंसी थ्योरी. दिस इज द बेस ऑन विच इंडिया में व्हाट यू कॉल इट एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फंक्शंस या ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन. नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी. And one more thing other than agency theory is the stewardship theory. Alright, okay. So you guys are writing this down. I shouldn't change the slide. Okay, so agency theory के आगे ही है stewardship theory. There's a reason why I put stewardship theory right there. Stakeholder theory, shareholder theory, models of CG. Okay, 3 models पढ़ के जाने का. CSR ये वर्ड है. तो CSR ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में कब से है? इंडियंस कब से CSR फॉलो कर रहे हैं? लास्ट? Let me bring you to CSR as a concept is not 50 years old, 60 years old, 100 years old. CSR as a concept has always been there in our society. Why do I say that? You all visited holy places like temples and all that, right? I mean, half of your public, I've been to Amritsar, and Golden Temple is obviously your what do you call it as the thing, right? Temples like those were constructed since the time the society started functioning. And who constructed these temples, mosques, educational institutions, dharamshalas? What is a dharamshala? Anybody? Dharamshala, what's a dharamshala? Not the place I'm talking about. What is a dharamshala? हाँ गया, मस्त कंडा होता है. नहीं, I'm talking about a dharamshala. What's a dharamshala? Anybody in the class? Dharamshala क्या होता है? Place where travelers can rest. Thank you so much. Dharamshalas are places where weary travelers could stay, rest the night, and then leave in the morning. No charges. Right? It's a safe place. क्यों? वो जमाने में वाइल्ड एनिमल्स उड़ लेगा. आपका कैसा स्ट्रे डॉग्स और आपको ऐसा शेर बन के घूमते हैं, वो टाइम पे लिटरली शेर घूमते थे. एंड इट वुड बी वेरी अनसेफ फॉर ट्रैवलर्स टू एंटर एंड एग्जिट अ सिटी. सो यू वुड हैव धर्मशालास. सो दे वुड स्टे द नाइट एंड दीस प्लेसेस वुड बी वेल लिट. आपको अच्छा खासा एक ऐसा प्लेस ऑफ स्लीप आपको दिया जाएगा. एंड दिस वाज मेंटेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है धर्मशाला यूज करने की. ये सब किसकी देन थी? These were kings, rich merchants, and all these people who ruled the cities. CSR as a concept. अभी मैं बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो CSR में आपको हमेशा याद रखना है, फिलैंथ्रोपी. मेरे को इसका स्पेलिंग मालूम नहीं है. I'm 100% sure I misspelled it, but philanthropy ये वर्ड सुना है? फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या है? What do you mean by philanthropy? अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. बिल गेट्स करके सुना है? मेलिसा गेट्स करके सुना है? शायद नहीं. बिल गेट्स की बीवी है. बिल गेट्स एंड मेलिसा गेट्स हैव अ फाउंडेशन वेयर बिल गेट्स हैज सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं जो पैसा कमाया है उसमें से $1 भी मैं मेरा बच्चे को नहीं देता, क्योंकि अमेरिकन है ना, $1. I will not give a share of my earnings to my son. The son has to earn for himself. Where are the money? Where is the money going? It is going for their charity works. So charity is just giving money. Philanthropy can be a number. Are you understanding what I am trying to say? So Indians, the CSR wala concept has always been there in our society. मतलब we were
as a society providers for somebody. That is why you have all these temples, mosques, educational institutions which were created by these people who could afford. The idea was very simple. मेरे पास पैसा है, I will put whatever excess money it is there to bring up the society. So as I grow, the society also grows. And that is why Indian society before the Mughals, before the Britishers, before the Portuguese was a very very good in the sense आज भी good है लेकिन खाली values and culture में. वो टाइम पे अपने पास literally पैसा था. The society was a very very welfare oriented society. CSR ये concept हमेशा से अपने पास था. लेकिन CSR ये वर्ड क्रिएट किया, काफी इसको स्टाइलाइज करके दिया गया है, वो अमेरिकन से है तो हम लोगों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया. आप जो टाइम बता रहे हो करेक्ट है. फेयरली अबाउट 60-year पीरियड से CSR चालू हुआ है. CSR में आपको काफी चीजें याद रखनी है. CSR पहला चीज है, पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इट इज नॉट शेयर होल्डर ओरिएंटेड, इट इज स्टेक होल्डर ओरिएंटेड. याद है स्टेक होल्डर थियरी, शेयर होल्डर थियरी जो आप सीजी में थे. स्टेक होल्डर शेयर होल्डर थियरी ये बोलता है, मिल्टन फ्रीडमैन ये बोलता है कि आपको खाली आपके शेयर होल्डर के बारे में सोचना है. स्टेक होल्डर थियरी क्या बोलता है, सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचना है लेकिन आपको स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है. What is a stakeholder? How is a stakeholder different from a shareholder? Stakeholders are basically the distributors. Okay, so how do you explain the concept of a stakeholder? Shareholder is a small part of the stakeholders. So who else are your stakeholders? People. This is your organization. Everybody who has a direct or an indirect relationship with you will be a stakeholder. तो आपने ऐसा बोला डिस्ट्रीब्यूटर, आपका कस्टमर, आपका सोसाइटी, आपका क्रेडिटर, आपका वेंडर, आपका द होलसेलर, आपका सप्लायर, you have the environment, you have the government, and still I would have not mentioned all the stakeholders. Stakeholder theory क्या बोलता है, खाली शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचने का. You have to equally think about all these things. Stewardship theory आपने जो corporate governance में लिखा है, ये एजेंसी थियरी का डायरेक्ट उल्टा है बोल सकते हो आप. एजेंसी थियरी में क्या बोलते थे कि आपको प्रिंसिपल को एजेंट पे नजर रखना बहुत जरूरी है इफ दे वांट टू गेट द फंक्शनिंग डन. स्टीवर्डशिप थियरी में क्या बोलते हैं कि दे आर मैच्योर इनफ टू हैंडल इट ऑन देयर ओन. एंड स्टीवर्ड मतलब ट्रस्टीशिप है, मतलब मेरे हाथ में सौंपा गया है, आई एम ओनली गोइंग टू डू इट एथिकली. ट्रस्टीशिप वाला मैनेजमेंट महात्मा गांधी ने एक जमाने में बोला था कि यार what is going to work best for organizations is going to be trusteeship, where you act as if you are just a trustee. मतलब ओनर कोई और है लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसमें कुछ गफला नहीं करूं, एंड आई डू व्हाटएवर इज एथिकली करेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबॉडी इज विद दिस. तो CSR हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. CSR एम्ड एट द स्टेक होल्डर्स, मतलब आउटसाइड एजेंट्स, बट CSR विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. विद इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप अगर एथिक्स इन HRM देखोगे तो आपको टॉपिक सिमिलर मिलेंगे. एथिक्स इन HR मतलब क्या है, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट योर एम्प्लॉइज, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन, excellent incentives, increments program so that they can function better, so that they will be loyal to the organization. All kinds of due process that you follow, मतलब आप किसी को ऐसा randomly निकाल नहीं सकते. You have to follow a due process. You have to give them a notice. You have to bring it to their this thing. They have to be given ample amount of time to leave the organization, search for a new job or whatever. तो आपका HR practices related पूरा का पूरा CSR within the organization में जाएगा. Are you understanding this? Everybody is with me on this. दो important topics CSR में वो है sustainable development and triple bottom line. आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक डायग्राम बनाना है. जो I'm sure you already know this. You draw a triangle. What is the triple bottom line? Everybody. Thank you so much. People, profit, planet, and I'm so happy that you used people first and not profit. एक जमाने, I mean finance students in the class will know this. एक ही bottom line हुआ करता था organizations के लिए, मतलब organization अच्छा कर रहा है गंदा कर रहा है कैसे मालूम पड़ता था? The profit वाला bottom line आपको मालूम पड़ता था profit and loss statement में. लेकिन आज के जमाने में companies need to have 3 bottom lines. Am I making profit? Am I being a better organization for people? People will include my employees as well as the general society. And the third P is planet. Am I doing something that is going against the planet? Am I indulging in throwing wastewater into the natural resources? Am I overutilizing natural resources? Am I cutting down forest or whatever it is? These 3 things. इसके लिए मैं एक example देता हूँ.
आईटीसी कंपनी के वेबसाइट पर जाने का, एक ऊपर टैब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी करके रहेगा, उसमें क्लिक करने का। ITC, this company does brilliantly what you call it as triple bottom line. वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं सोसाइटी के लिए, प्लानेट की तरफ उन लोग काफी ख्याल रखते हैं. एट द सेम टाइम दे मेक प्रॉफिट फॉर देयर शेयर होल्डर्स ऑल्सो. एवरीबॉडी इज विद मी ऑन दिस? यस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सेम लाइक ट्रिपल बॉटम लाइन, खाली आप लोग वर्ड्स डिफरेंट करोगे. व्हाट आर द थ्री वर्ड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? अभी ट्रिपल बॉटम लाइन में पीपल, प्रॉफिट, प्लानेट हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या लिखने का? इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल लिखने का. सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप लोग अपने रिसोर्सेस अभी ऐसे यूज करेंगे कि आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेस हो. एवरीबडी इज लिसनिंग टू दिस वंस मोर. You use the resources available to you in such a way that these resources are also there for your future generation. Why are you thinking about your future generation? Because your previous generation did not think about you. आज जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है या जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आपने प्लैनेट को है, if you see there are planet is kind of like hitting back. The number of tsunamis, earthquakes, pollution all highly increased. The reason is because we have been overusing our planet. And planets को क्या होता है? Earth as a planet एक लिमिट तक ये स्ट्रेच होगा, उसके बाद क्या होगा? It will hit back. So we are moving closer to extinction. I'm not scaring you, like it's not happening in the next 50 years so that you retire, but your children are definitely, in case you have a children, they are going to suffer 100%. That is why you have to talk about sustainable development. Imagine sitting in the class without gas masks. Imagine sitting in a classroom with masks. Why? Because no air. Air is not free from pollution. जो दिल्ली में होता है याद है, odd even rule. Remember? क्या वो पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, बट आइडिया वाज करेक्ट. वो पोल्यूशन की वजह से हो रहा था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर. कितने लोगों का लंग्स, एक स्टडी किया गया पिछले 2 दिन के पेपर में, आप एक स्टडी किया गया, इंडियन लंग्स आर परफॉर्मिंग 20% बिलो फुल कैपेसिटी. अपना लंग्स जो हम लोग को नेचुरली मिला बॉम्बे में, जो हम लोग जी रहे हैं, इट इज फंक्शनिंग 20, ये तो हार्ट है मेरा, इट इज फंक्शनिंग 20% बिलो द एक्चुअल लिमिट दैट इज सपोज्ड टू. Go get your lung checked out. You are breathing in and out. That is why you need an organization which will talk about pro society, pro environment, pro people. Everybody is with me on this. Last thing, last slide for the day, and I literally mean this. Last slide. Please do check out Tata, the organization's 10 core principles for CSR. ये आपको लिख के लेने का जरूरत नहीं है. मेरी बात सुनो, गूगल में जाने का, ये वर्ड डालने का, 10 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ CSR एट टाटा. टाटा का वेबसाइट खुलेगा, आपको ये डायग्राम मिलेगा. ओके, इसमें पूरा का पूरा CSR समराइज किया गया है. आई एम रिपीटिंग दिस. आपको ये पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, खाली वो वर्ड आप गूगल में डालोगे, आपको डायग्राम मिलेगा. डिटेल में घर पे जाके पढ़ना. ओके एवरीबॉडी? ऑलराइट, राउंड ऑफ क्वेश्चंस. कुछ है किसी को कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स? अभी बताओ.